Hi guys, welcome back to my channel, or welcome if you are new. Unfortunately, I wasn't able to upload a video recipe last week, but don't worry, I am back with some more delicious recipes that you do not want to miss out on. In this week's recipe, I'm going to be showing you all how I make this delicious and tempting Black Forest Trifle which will be loved by everyone. So let's get started. आज की रेसिपी में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल कैसे बनाती हूँ। ये ट्राइफल बहुत मजेदार है और आपकी पूरी फैमिली को और फ्रेंड्स को भी पसंद आएगा। तो आ जाए हम शुरू करें। If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. And you can hit the bell icon for notifications every time I upload. For this recipe, you'll be needing 80 grams of cherry jelly powder, which is equivalent to 1 packet, 1 cup of water, which is 250 milliliters. However, you may need more or less depending on how much is required for your jelly. You'll also be needing half a cup of fresh cherries, some dark chocolate flakes. The amount you use depends on how much you want. You also need some double cream, from which we'll make some whipped cream. I'm using 250 grams. The amount of chocolate cake that you use depends on your preference. We also need 1 tin of tinned cherries, which are in liquid. Finally, if you want, you can add in 1.5 tablespoons of sugar into the double cream when making the whipped cream, but this is completely optional. इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 80 ग्राम चेरी जेली का पाउडर, यानी कि 1 पैकेट। इसके साथ हम डालेंगे 250 मिलीलीटर पानी, या जितना आपके पैकेट के ऊपर लिखा है। साथ में हमें चाहिए आधा कप फ्रेश चेरीज, डार्क चॉकलेट के फ्लेक्स, डबल क्रीम जो मैं तकरीबन 250 ग्राम यूज कर रही हूँ, चॉकलेट केक, 1 टिन चेरीज का, और अगर आप चाहें आप 1.5 टेबलस्पून आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूज करनी जरूरी नहीं है। First of all, we're going to prepare the jelly as it will take the longest time to set. सबसे पहले हम जेली को तैयार कर देते हैं, इसलिए कि इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। Now this is completely optional but highly recommended. Inside my jelly I'm adding in some pitted and half cherries. These are fresh. अब मैं जेली के अंदर फ्रेश चेरीज डालने लगी हूँ, जिनको मैंने दरमियान से काटा है और अंदर से बीज भी रिमूव कर दिया है। Whilst the jelly sets, let's move on to the next step. जितनी देर तक जेली सेट हो रही है, हम बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। Now I am making the cherry syrup. To make this, all you need to do is empty the tin of cherries and collect their syrup, and then we're going to boil this on medium-low heat. अब हम चेरी का सिरप तैयार करते हैं। चेरी का सिरप बनाने के लिए आपने उसके टिन के अंदर से सिरप रिमूव कर देना है और इसको मीडियम लो हीट पर 1 या 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। Today I am using shortbread cake, which unexpectedly was really difficult for me to find. However, if you want, you can always use homemade as well. आज मैं रेडीमेड केक यूज करने लगी हूँ, लेकिन अगर आप चाहें आप होममेड भी यूज कर सकते हैं। When cutting the cake, make sure that you cut it into cubes. You can make these cubes as big or as little as you like. केक को हमने क्यूब्स में काटना है, तो आप इनको बड़े या छोटे रख सकते हैं। Now let's prepare the final component for the trifle. We need to prepare the whipped cream. Into a large mixing bowl, I'm adding in 1.5 tablespoons of sugar along with some double cream. अब हम ट्राइफल का आखिरी हिस्सा तैयार कर देते हैं। हमने whipped cream तैयार करनी है। मैंने एक लार्ज मिक्सिंग बोल लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 tablespoons आइसिंग शुगर के डाले हैं और साथ में मैं डबल क्रीम डाल रही हूँ। Now we need to whisk the cream. You can either do this by hand, but I would really recommend you use an electric whisk. डबल क्रीम को whisk करने के लिए आप हैंड whisk यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको recommend करूंगी कि आप electric whisk यूज करें। You'll know that the whipped cream is ready when you turn the bowl upside down and it does not fall out. आपको पता चल जाएगा कि whipped cream तैयार होगी जब आप बोल को उल्टा करेंगे और वो बाहर गिरेगी नहीं। Now we can start assembling our trifle. अब हम ट्राइफल के लेयर्स लगाना शुरू कर सकते हैं। To prepare, I'm going to cut the jelly into cubes.
जेली के मैंने क्यूब्स कर दिए हैं। For the base layer, I'm adding in a layer of chocolate cake. सबसे पहले मैं chocolate cake का layer लगा रही हूँ। Next up are the tinned cherries which have been drained. अब मैं अंदर थोड़ी सी tinned और drained cherries डाल रही हूँ। When pouring the delicious cherry syrup, try to be as generous as possible because you do not want to miss it out. It really does add in the best of flavors. जब आप cherry का syrup डालें, आप एक generous amount डालें इसलिए कि ये बहुत मजेदार है। Now I'm going to add on the jelly layer. अब मैं ऊपर jelly की layer लगा रही हूँ। As always, you can change the layers around and add it in any order that you want. ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे order में ingredients डालें, आप order को change भी कर सकते हैं। Finally, it's time for the whipped cream layer, and then you can repeat this process until your bowl or your dish is filled. अब आखिरी लेयर हमारी whipped cream की लेयर है। फिर आप ये प्रोसेस रिपीट करें जब तक आपका बोल या आपका डिश ठीक तरह फुल हो जाए। Now, if you wish, you can decorate the top of the trifle with some icing and some chocolate shavings. I prefer to use dark chocolate. ट्राइफल को डेकोरेट करने के लिए आप ऊपर और whipped cream डाल सकते हैं और chocolate shavings. मैं recommend करूँगी कि आप dark chocolate यूज करें। Now the final thing to do before you're ready to serve this or refrigerate it, you need to add on some fresh cherries. This will really up your presentation to the next level. सर्व करने से पहले आप इसके प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर fresh cherries भी डाल सकते हैं, इससे और ज्यादा खूबसूरत ट्राइफल बनेगा। So here it is guys, here is the end result. This is absolutely delicious and will be loved by everyone, but don't just take my word for it. I hope you give this recipe a try and let me know in the comment section down below how you find it. तो ये देख रहे हैं हमारा ट्राइफल अब तैयार हो गया, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप क्या देखना चाहते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Bye. If you like my video, please give it a thumbs up and subscribe if you haven't already. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.